Hello students, let's see the question first. In a reflex action, the efferent neurons receives a signal from, receive a signal from the options are CNS, VNS, ANS, both 1 and 2. रेफ्लेक्स एक्शन में जो efferent न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें सिग्नल कहां से मिलता है, ठीक है। सो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, the key concept which we are using for that, what is reflex action. reflex action reflex action कैसा होता है, it is an involuntary response towards the stimuli. So it is an involuntary response towards stimulus, stimuli, okay. And it is very quick process. Within the seconds this process occur basically. So it's very quick response. And generally it is controlled and by the spinal cord. So we can say it is controlled by the CNS, or we can say central nervous system. It is controlled under control of CNS, that is the central nervous system. Central nervous system जो होता है वो दो पार्ट से मिलके बनता है, ठीक है। Central nervous system is consist of the two parts basically, that is consist of brain and spinal cord. Generally जो reflex action होते हैं that is mostly controlled by the spinal cord. ब्रेन के भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो ब्रेन से कंट्रोल्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस. Cerebral reflex action, and they are called as spinal reflexes. जनरली ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं, ताकि ब्रेन तक मैसेज जाएगा तो टाइम लगेगा, तो उस टाइम को बचाने के लिए स्पाइनल ही कॉर्ड ही कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाथवे फॉलो होता है एंड द पाथवे इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेप्टर के पास में स्टिमुलस आता है. सो रिसेप्टर हैज टेकन द स्टिमुलस, फ्रॉम द रिसेप्टर it reaches to the spinal cord. Okay, it reaches to the spinal cord, and from the spine, in the spinal cord there are relay neurons give the message to the motor neuron, and through the motor neuron it goes to the effector area. Effector, these are basically the muscles which gets contracted, and receptors are generally the sense organ basically. Receptors are generally the sense organs. So through which neuron it occurs basically, that is the question. So receptor say if affect efferent neuron, or we can say sensory neuron के थ्रू ये मैसेज जाता है कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं रिले न्यूरॉन, जो कि इस मैसेज को सिर्फ कन्वे करने का काम करेगा टू द मोटर न्यूरॉन. सो स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन, और वी कैन से दी efferent neuron goes out
and takes the message to the effector area. Okay, so through which neuron basically it occurs. So on the basis of this discussion, in a reflex action, the efferent neuron receives a signal from the CNS. Efferent neuron takes the signal from the CNS, that is the which includes the brain and spinal cord, and generally the spinal cord is there. So our final answer is option A. I hope you understood well. Thank you so much. All the best.